हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ए वीडियो आम जाना प्रमोशन बाबद प्रमोशन ऑफ नेक्स्ट हायर लेवल देखंतु लेटर डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस ऑल डीओ मानू ऑल बीओज मानू चिठी आसी प्रिपेरेसन करेंगे ग्रेडेशन लिस्ट एलिमेंट्री कैडर मानकर। तेबे प्रीवियस प्रमोशन जो गाइडलाइन थिला तापाई हाईकोर्ट होता तापरे न्यू लेटर आसी हाईकोर्ट ताकू ऑर्डर करथिले न्यूली फॉलो करिबा पई। देखंतु ऑर्डर नंबर डेट 10/10/2023 पास्ट WPC 32,674 ऑफ 2023 फाइल बाय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा एंड अदर्स एपरि थिला। तेबे इन इनवाइटिंग ए रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सीटेड अबव pursuant to order Honorable High Court pass 10/10/2023 it is to intimate you that you are requested to prepare the gradation list of elementary cadre teachers in accordance with rule 15 of OE वा Odisha elementary education जोटा कि मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स एंड ऑफिसर्स रूल 1997 एंड अमेंडमेंट रूल 2019 within a period of 2 months from the date of issue of the direction to conclude the process of promotions in accordance with rule 11 with a period of 1। तेबे आई रूल 15 कौन रूल 11 कौन ताहा डिटेल्स जानिबा। तेबे रूल 15 यही ओई रूल्स 1997 एवं अमेंडमेंट रूल 2019 अनुजाई यही ग्रेडेशन लिस्ट हेबो 2 मास मध्य आई 27/10/2023 डेट ठारू 2 मास मध्य यही ग्रेडेशन लिस्ट ब्लॉक रे डिस्ट्रिक्ट रे बाहरिबो एवं conclude the process of promotion टा गोटे मंथ मध्य विदिन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ ता समाप्ति हो बा कंप्लीट हेबो। तेबे आसंतु डिटेल्स जानिबा। देखंतु एटा नोटिफिकेशन स्कूल एंड मास एजुकेशन रो 8 मार्च 2019 रो एटा हला। देखंतु अमेंड द ओडिशा एलिमेंट्री एजुकेशन और OEE मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन सर्विस ऑफ टीचर्स एंड ऑफिसर्स अच्छी रूल 1997 यहा। तेबे OE अमेंडमेंट रूल्स 1997 टी नामित होईची OE अमेंडमेंट रूल 2019। देखंतु नेमली दीज रूल्स मे बी कॉल्ड OEE मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ टीचर्स एंड अमेंडमेंट रूल्स 2019। तेबे यही ओडिशा एलिमेंट्री एजुकेशन अमेंडमेंट रूल 2019 शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशंस इन ओडिशा गेजेट। यह केबे ओडिशा जियो बाहरी तेबे ठारू यही अमेंडमेंट रूल्स 2019 लागू हेबो। जोटा कि अमेंडमेंट रूल्स 2019 होची OE अमेंडमेंट रूल्स 1997। तेबे एटा 8 मार्च 2019 रो नोटिफिकेशन तेबे ठू लागू होईची। तेबे रूल 15 देखिबा एठी। देखंतु एटा 7 नंबर रे रूल 11 अछि। तेबे 8 नंबर रे रहिची। देखंतु 8 नंबर रे अछि रूल 15। 8 नंबर रे रहिची रूल 15। देखंतु 8 इन द सेड रूल्स इन रूल 15 इन सब रूल 1 क्लॉज A फॉर द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन लेवल 5th 4th एंड 3rd द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन लेवल 4th A 5th B 4th एंड 3rd। तेबे प्रथमे लेवल 5th 4th एवं 3rd एपरी तीनोटी लेवल थिला, किंतु यही अमेंडमेंट 2019 लागू हेबा परे लेवल 4th A 4th B एवं
फोर्थ लेवल फिफ्थ ए फिफ्थ बी फोर्थ एंड थर्ड हिसाब रे चारोटी लेवल होइछि ताहा हला सब्स्टिट्यूटेड ओके इन सब रूल 1 द क्लॉज डी द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली देखंतु लेवल 4 फिफ्थ ए पई सेपरेट ग्रेडेशन लिस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर level 5th A of the service shall be prepared taking into consideration the following qualification and training plus 2 examinations or bachelor degree in any discipline or equivalent examination with secondary teacher training or certified teacher course or diploma elementary education or pass in OTT 1 ये सब रही कैटेगरी 1 पई एंड कैटेगरी 2 पई बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और an equivalent examination with secondary teacher training certified teacher course or diploma in elementary education bachelor in education and pass in OTT 2 एपरी कैटेगरी 2 रे रही तापर देखंतु प्रोवाइडेड दैट द टीचर अपॉइंटेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड prior to 11 February 2011 are exempted from the OTT 1 and 2 separate gradation list of senior teachers in level 5th B of the service shall be prepared after taking into consideration option exercised by the senior teachers as well as will be notified having qualification of bachelor degree in any discipline with secondary teacher training or certified teachers course or diploma in elementary education and pass in Odisha teacher eligibility test 1 for considering promotion to level 4th of the service provided that such senior teacher in level 5th B of service exercising their option to become graduate teacher have passed OTT 2 they shall be placed in gradation list of senior teachers with bachelor degree below the existing teachers taking into account the date of passing OTT 2 as well as the seniority in the merit list finalized for promotion to the grade of level 5th B of the service तेबे लेवल 5th B रे थिबा टीचर्स माने 4th को हेबा पई OTT 2 दरकार तेबे OTT 2 हिसाब रे तार पास आउट हिसाब रे तांकर मेरिट लिस्ट फाइनलाइज हेबा प्रमोशन पई तेबे दिस इज द रूल 15 ऑल देखंतु इन सब रूल 6 एटा सब रूल 6 अछि इन सब रूल 1 रही और द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली एक्सप्लेनेशन आईए all existing teacher working in level 5th of the service shall be treated as the level 5th A of the service from the commencement of these rules the seniority of such teachers shall be determined with reference to the date of their appointment as member of level 5th B तापर explanation B रही देखंतु the inter-C seniority shall be determined on the basis of the absorption of JT as regular teacher as per the merit list and their seniority will be taken into consideration while preparing the gradation list at different level including the gradation list of level 3rd at director level एटा हला रूल 15 तेबे रूल 11 देखि नवा देखंतु एटा रूल 11 in the said rules in rule 11 the sub rule 1 the following sub rule shall be substituted namely in order to be eligible for promotion of the post level 5th B of the service the candidate must have served for continuous period of 4 years in the post of belonging level 5th A of the service provided that 50% vacancy shall be filled up by the candidate having passed high school certificate plus 2 or graduation with secondary teacher training in elementary education from any recognized university ये सब रही OTT 1 दरकार तापर कैटेगरी 2 50% of the vacancies shall be filled up by the candidate possessing a bachelor degree any discipline with OTT or secondary teacher training certified teacher course diploma ये सब रही तेबे for sub rule 2 the following sub rule shall be substituted देखंतु in order to be eligible for promotion to the post of HM
of the government primary school level 4th of the service candidate must have first high school certificate or higher secondary examination or graduation with secondary teachers training, certified teachers course, diploma in elementary education, bachelor in education, must have served for a continuous period of 2 years in the post of level 5th B of the service. In order to be eligible promotion the post of graduate teacher in government upper primary school level 4th of the service candidate must have possessed a bachelor degree in any discipline and equivalent examination with secondary teacher training or certified teacher course or diploma in elementary education. Bachelor in education must have served for continuous period of 2 years in the post of belonging level 5th B of the service. Provided that in case of non-availability adequate number of person for the promotion level 4th of the service, 6 years of service in level 5th A B shall be taken together consideration of promotion but must have rendered at least 1 year service in level 5th B. এইটা रूल 11 कहूँ तेरे फ्रेंड्स एठी इनिशियल अपॉइंटमेंट रे जेते क्वालिफिकेशन रहिबा कथा ता ऊपर किछि नाही सो दैट द प्रेजेंट क्वालिफिकेशन should be considered. Thank you friends, please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.